Hello everyone. So with a view to help you in better preparation for your examinations, I will be discussing some MCQs, multiple choice questions. And while discussing this multiple choice questions, how different multiple choice questions can be formed, I will be also discussing that. The first multiple choice question is, what amount is accepted for deduction under section 80DD regarding disability? Now here the options, what you will select is, if it is normal disability, then the amount that you have to select is rupees 75,000, or the option you have to select is rupees 75,000. In case of severe disability, it will be rupees 1,25,000. So it depends on what are the options available before you and what kind of disability it is said about. In the same way, another multiple choice question can be formed, that what amount is accepted for the deduction of related to disability of the assessee himself. Deduction can be claimed under. Then options are section 80C, section 80D, section 80DD, 80U. So when the assessee himself is disabled, then in that case the deduction can be claimed under section 80U. Then in the same way, another multiple choice question, that under which section deduction can be claimed for a dependent disabled. The options again, 80C, 80D, 80DD, 80U. So here, when it is related to the dependent disabled person, means a person who is dependent on the assessee and he is disabled, then the deduction can be claimed under section 80DD. Okay. Then which of the following is eligible for 100% deduction under section 80G? Okay. Prime Minister's Draft Relief Fund, National Sports Fund, Rajiv Gandhi Foundation, and Jawaharlal Nehru Memorial Fund. So here, National Sports Fund is the amount, is the fund for which 100% deduction can be claimed. Means it is eligible for 100% deduction. Means whatever amount is donated, 100% of that amount is allowed as deduction. Section 80C applies on. So if you know, section 80C is applicable only to individuals and HUF. Means deduction under section 80C can be claimed only by individuals and HUF. Then, donation to Prime Minister's National Relief Fund is deductible 100% of the out of the gross total income of the assessee under which of the following sections of Income Tax Act? तो 80C, 80G, 80GG, 80D, कोई भी ऑप्शंस हों, लेकिन इसमें से आपको चूज कौन सा करना रहेगा? 80G ही चूज करना रहेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड का डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G ही क्लेम किया जा सकता है. देन फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 द मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज, चाहे कोई भी ऑप्शंस आपके सामने हो, द मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज रुपीज 1,50,000. दिस लिमिट इज गिवन अंडर सेक्शन 80CCE. सो यू हैव टू कीप इन माइंड, मैं इसके साथ साथ जो बोल रही हूँ तो आप वो भी ध्यान रखिए कि उससे रिलेटेड भी कोई भी MCQ बन सकता है. मतलब द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रुपीज 1,50,000 कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन इज गिवन इन सेक्शन 80C, 80CC, CCC, 80CCD, 80CCE. तो ये जो मैक्सिमम लिमिट दी हुई है ये 80CCE में दी हुई है. तो आपको ये ध्यान रखना है एंड यूज योर कॉमन सेंस व्हेन यू आर चूजिंग द ऑप्शन. One more thing I'd like to tell, that sometimes your own instinct gives you the correct answer, and then due to some confusion or due to external factors,
Many a times we see that students cut the right answer and they select the wrong answer. So have faith on your that instinct, that knowledge, that memory, क्योंकि कभी कभी वो आपको बताता है कि सही आंसर ये है और हम कभी कभी किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से डाइवर्ट हो जाते हैं और फिर हम गलत ऑप्शन चूज कर लेते हैं. तो टेक केयर ऑफ दिस थिंग. Then, which of the following item is covered under section 80D? Repayment of loan taken for higher education, then medical treatment of handicapped dependent, then medical insurance premium, and none of the above. तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम यदि क्लेम करना है तो वो हम क्लेम करते हैं अंडर सेक्शन 80D. Medical insurance can be claimed, deduction related to medical insurance can be claimed under section 80D. Now, repayment of loan taken for higher education ये section 80E में claim करते हैं. Medical treatment of handicapped dependent can be claimed under section 80DD. और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन हम क्लेम करते हैं अंडर सेक्शन 80D. Then under section 80E, deduction in respect of payment of interest on loan taken for higher education shall be up to. So keep in mind that there is no limit for the deduction under section 80E. The deduction can be claimed for a maximum period of 8 years. पर कितना डिडक्शन क्लेम किया जाएगा मैक्सिमम उसकी कोई लिमिट नहीं है. तो आपके सामने तीन फिगर्स हैं और एक यदि नो लिमिट है तो आपको नो लिमिट ही चूज करना है क्योंकि उसकी कोई लिमिट दी हुई नहीं है. कितना भी अमाउंट का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है अंडर सेक्शन 80E फॉर द लोन इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन. Then maximum deduction in respect of medical insurance premium paid for a senior citizen is rupees 50,000. यदि सीनियर सिटीजन नहीं है तो फिर 25,000 है और यदि सीनियर सिटीजन है तो इट इज 50,000. अब मान लीजिए कि आपने कैश में प्रीमियम पे किया है. ठीक है, सीनियर सिटीजन का प्रीमियम है और आपने कैश में पे किया है 50,000 का तो आपको डिडक्शन मिलेगा नील. सीनियर सिटीजन नहीं है, रेगुलर सिटीजन है और उनका भी इंश्योरेंस प्रीमियम आपने कैश में पे किया है, चाहे 5,000 पे किया हो, चाहे 10,000 पे किया हो, चाहे 25,000 पे किया हो. यदि कैश में पे किया है तो द डिडक्शन दैट यू कैन क्लेम इज नील. सो इट इज एन एसेंशियल कंडीशन कि जब भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपको पे करना है तो इट शुड बी पेड इन अकाउंट पे चेक और डिमांड ड्राफ्ट, मतलब कैश में या बेयरर चेक के थ्रू पे नहीं किया जा सकता. Then a resident individual received rupees 5 lakh as royalty on a literary book. He will get deduction under section 80 QQB. कितना डिडक्शन क्लेम कर सकता है? तो मैक्सिमम रुपीस 3 लाख का डिडक्शन मिलता है रॉयल्टी इनकम पे. अब आपके सामने फिर और भी ऐसा ऑप्शन आ सकता है कि इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, deduction for income from royalty can be claimed under section. You will be given some options and one will be 80 QQB. तो 80 QQB पे ही आपके अंतर्गत आप रॉयल्टी फ्रॉम बुक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. And the maximum amount of deduction which can be claimed under section 80 QQB is rupees 3 lakhs. In the same way, an individual who is resident in India can claim the deduction for royalty on patent income up to rupees 3 lakh. और ये 80 QQB का डिडक्शन भी रेसिडेंट इंडियन को ही है, मीन्स एन इंडिविजुअल हु इज रेसिडेंट इन इंडिया. So if a person is non-resident in India, then can he claim the deduction under section 80 QQB or 80 RRB? He cannot claim the deduction under section 80 QQB or 80 RRB because both these deductions are available only to individuals resident in India.
Then, on which of the following deduction under section 80G is not allowed? तो यदि आपने मेरा एक प्रीवियस वीडियो उसमें देखा होगा डिडक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक रूल्स कि कौन सी इनकम में से डिडक्शन नहीं दिया जाता है, तो इस एमसीक्यू का आपको आंसर तुरंत क्लिक हो जाएगा। और यदि आपने नहीं देखा है वो वीडियो, तो द करेक्ट आंसर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। अब यदि इसके साथ के ऑप्शंस क्या हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है। यदि आपके सामने ऑप्शन रहता था कैजुअल इनकम एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव, तो फिर वहां पे आप चूज करते सी, क्योंकि एटीजी का डिडक्शन उसमें से भी क्लेम नहीं किया जा सकता। Then Mr. Rajat is completely blind. He will avail deduction under section 80U. The maximum amount of deduction under section 80U is 1,25,000. And as a person is blind, उसको 80% से ज्यादा डिसेबिलिटी में माना जाता है, सिवियर डिसेबिलिटी में माना जाता है, तो डिडक्शन कितना क्लेम किया जा सकता है? 1,25,000. देन डिडक्शन एडमिसिबल अंडर सेक्शन 80E, वो तो हमने कुछ देर पहले भी डिस्कस किया था कि इट इज रिलेटेड टू डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन पेड फॉर हायर एजुकेशन। Then how much maximum amount can a person deposit in public provident fund in a financial year to earn interest on it? The maximum amount which a person can deposit in PPF is rupees 1,50,000. इससे ज़्यादा deposit नहीं कर सकते. Deduction under section 80C is not applicable to or not available to individual, HUF, company, all of these. तो यहाँ पे आप चूज करेंगे कंपनी, क्योंकि एटीसी के डिडक्शंस सिर्फ इंडिविजुअल्स और एचयूएफ को मिलते हैं। सो आई होप दीज few deductions, MCQs related to deductions will help you to get some better understanding related to your unit 5 of deductions. Then few more MCQs which we can discuss is that deduction for the interest on loan taken for the purchase of electrical vehicle is available under section 80 EEB. Then the options आपके सामने दो चार कुछ भी रह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदने के लिए लोन लिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट पे करेंगे उसका डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80 EEB. Then in the same way for 80GG, this deduction is available only to individual regarding expenditure on the house rent in excess of 10% of total income by self-employed persons and salaried persons who are not entitled to HRA. मतलब 80GG का डिडक्शन किसको मिलेगा? तो 80GG का डिडक्शन या तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को मिलेगा, और यदि सैलरीड पर्सन को मिल रहा है तो सैलरीड पर्सन वो जिसको HRA नहीं मिल रहा है। 80 EEA का डिडक्शन इज रिलेटेड, again it is only individuals are eligible to claim the deduction under section 80 EEA. It is regarding the interest on loan taken for residential house, and the maximum amount of deduction which can be claimed is rupees 1,50,000. 80 EE का भी डिडक्शन इंडिविजुअल को ही मिलता है, और वो भी इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, एंड द maximum amount of deduction which can be claimed under section 80 EE is rupees 50,000. So these are some deductions which will help you to get some clear understanding related to the